लॉकर क्यों, लॉकर प्रिज्यूम कर लिया आपने कि लॉकर इन्होंने सरेंडर कर दिया और तोड़ दिया। साथ में जो लिस्ट गया था उसमें से लिस्ट में से इस लॉकर का नंबर किसने लिस्ट बनाया? लिस्ट बाद में बना है, जो लिस्ट तो नहीं हमारे पास। लिस्ट बना था कि ट्रांसफर हुआ था दानापुर से यहाँ लॉकर सर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, योर मैनेजर इज हियर। यस ठीक है, बैठाइए, अभी पूछेंगे तब। उनसे रिकॉर्ड ले लीजिए। Who has? You have drafted this counter affidavit. Come to para 9. Is this a suppression of fact? If a person files a criminal case, he is debarred from filing a writ application. Then what is this suppression of fact? हमने लिखा कि किया हुआ है पहले से क्रिमिनल केस में। Criminal case is different and writ application is different, consumer forum is different. This writ application has been filed because the complaint has been dismissed by the ombudsman. If a crime is committed, criminal case will be filed for compensation. If someone has filed a case in consumer forum, and here you say that suppression of fact, your man goes behind bars and you are saying that it is suppression of fact. लॉकर क्यों, लॉकर प्रिज्यूम कर लिया आपने कि लॉकर इन्होंने सरेंडर कर दिया और तोड़ दिया। साथ में जो लिस्ट गया था उसमें से लिस्ट में से इस लॉकर का नंबर किसने लिस्ट बनाया? लिस्ट बाद में बना है, जो लिस्ट तो नहीं हमारे पास। लिस्ट बना था कि ट्रांसफर हुआ था दानापुर से यहाँ लॉकर सर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इफ समवन इज हैविंग ए लॉकर, बिफोर breaking open the locker, it was your duty to make sure that the locker has not been surrendered. The person is not interested in continuing with the locker. Valuables are there in the. Who are your witnesses? Let me see. 45 नंबर। आपके वकील होंगे वो पैनल के गवाह। सुशील कुमार सिन्हा। दो इंडिपेंडेंट विटनेस हैं जो। अरे इंडिपेंडेंट तो आप बोल रहे हैं ना। नो आर्टिकल फाउंड, लॉकर फाउंड वैकेंट, सुशील कुमार सिन्हा एडवोकेट। हमने क्या कहा था? पहले ही कहा था कि आपके वकील होंगे वो। आप अपने एक वकील, पैनल वकील को ले गए, खड़ा कर दिए। वो इंडिपेंडेंट विटनेस का मतलब क्या होता है? द पर्सन should not be connected in any manner with the bank. He is earning his bread and butter through you. How can he be independent? And who is this? The other independent witness? कस्टमर है ये सारा नंबर, सॉरी पेज नंबर 17 पे देखा जाए, लिखा है जो हमारा गाइडलाइंस है। क्या गाइडलाइन है कि प्रिजम्स? हमको गाइडलाइन में एक सेंटेंस दिखा दीजिए कि अगर आप प्रिज्यूम कर सकते हैं कि किसी ने सरेंडर किया है, हमको वो पढ़ाइए। गाइडलाइन पढ़ाइए हमको। Whether the bank can presume that the locker has been surrendered. Who will presume this? Who has taken this decision that the locker has been surrendered? ह्यूमन एरर है। मिस्टेक से हो गया, उसके लिए FIR भी हो गया। ट्रायल कोई मिस्टेक से नहीं हुआ है। आपके बैंक एम्प्लॉय को चाहिए था, आपने दूसरे को दिया है। ये अपने एफिडेविट में आपने सप्रेस कर दिया। Your employee has been given a locker after these lockers were broke open. साथ में और भी हुआ था। तो आपने अपने एम्प्लॉय को दिया, तो कस्टमर को नहीं दिया ना ये लॉकर। It will be presumed that you wanted to allot a locker to your employee, therefore you have adopted this. RBI आपने कुछ पेनलाइज किया बैंक को?
इस प्रिजम्पशन के लिए, इस एफिडेविट के बाद आप एनालाइज करेंगे? कब करेंगे? लिबर्टी दे दिया, लिबर्टी नहीं, पेनलाइज करके ऑर्डर हमको लेकर आइए। लिबर्टी आप लोग तो सब मिले हुए हैं। ओनली वन प्रॉब्लम लॉर्ड, वो जो स्कीम है हम लोग का, उसमें है कि व्हेन अ मैटर इज पेंडिंग इन एनी ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट्स वेयर एडजुडिकेशन इज डन, देन इट ombudsman power vanishes because it is The cases have been filed after the ombudsman rejected Yes, Lord, so that's why I'm rejected saying, her Lord, claim. that's So why the power of ombudsman was there. was there for that fresh order to be passed, my lord. I'm speaking for that, my lord. Ah. They would penalize, my lord. Matter may be remanded. I had a talk with the present ombudsman, my lord. He says कि they conceded कि हमसे गलती हो गई, and then they went on कि whether after that whether process for breaking of the locker was followed or not. But they conceded to that, my lord, कि it was not this locker, they were wanted to break the other one. उसके साथ presumption was कि भी locker का rent नहीं paid है, इन्होंने गलती से तोड़ दिया. There were no notice, nothing, no publication. That is admitted fact. But my ombudsman, my lord, I will say, he is feeling, my lord, if an opportunity is given, my lord, he would again conduct the proceedings in the right spirit. वो लॉकर में कभी कभी आता है कि पेपर में कि किसी के लॉकर से चोरी हो गया, वो कैसे बैंक के कनाइवेंस के बिना नहीं होगा? बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर लोग क्या, कैसे लोगों को आप लॉकर इंचार्ज बना रहे हैं? लोगों का कोई लॉकर तोड़कर सामान, मान लिया आपका विटनेसेस के सामने खुला सामान नहीं निकला, अब फॉर द प्रेजेंट हम, होता है कि जब पिटिशनर दुखी होता है तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, लेकिन कोई आदमी लॉकर का, खाली लॉकर का किराया नहीं देता, कुछ तो होगा उसमें। 13 के बाद से हुजूर किराया नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने तो, और दूसरा हुजूर की ब्रांच मैनेजर 1.5 महीना जेल रहा, जेल को डिसमिस क्यों नहीं किया आप? किसी का लॉकर वो तोड़ दिया, प्रिजम्पशन में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हुआ कि नहीं? सीपीआई इज आपका एफिडेविट साइलेंट है कि व्हाट हैज हैपेंड विद द ब्रांच मैनेजर, व्हाट, क्या हुआ ब्रांच मैनेजर के साथ? ब्रांच मैनेजर सर उनको जेल हुई थी। जेल तो चले गए, डिपार्टमेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया उनके साथ? तो सर रिटायर्ड हैं, वो रिटायर्ड अभी तो रिटायर किए, तो कब रिटायर किए? दिसंबर 2021। उससे पहले तो रिटायर कर गए, मतलब बैंक ने कोई एक्शन नहीं लिया ब्रांच मैनेजर पर? क्रिमिनल केस इज नॉट ए सिविल एक्शन, ही शुड हैव बीन पेनलाइज्ड। आपके यहाँ क्या पेंशन भी है? सर आप मिस्टर पतंजलि, please examine whether compensation can be awarded to the petitioner or not. Not for that her articles have been removed, but for illegal breaking open of the locker. I presume that there was no article for the time being, because there is no evidence and we cannot doubt even though the lawyer of the bank was a witness, but still it doesn't seem that there was some article kept in, some valuable kept in the locker. But for this, because they have to be penalized, every locker, if you want to break a locker, no one is coming, no one is paying you rent, you have to at least try to track the person, because the original locker owner dies. Sometimes his family members don't have the key or don't have the knowledge who is having, where is the locker. Everyone is not vigilant that he will or she will inform her next generation, his or her next generation, that this is my locker. Sometimes senior citizens, they don't want to disclose that they have a locker and they have something kept in the locker to their sons, daughters, son-in-laws, daughter-in-laws. ये ऑर्डर तो हम क्वाश करेंगे ही, लेकिन कंपनसेशन अब इमीडिएटली ग्रांट करेंगे कुछ,
आप इस पर जरा हमको कब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को रख दिया जाए। Wednesday. Heard the parties. The counter affidavit has been filed by the bank. This court is not satisfied with the actions taken by the bank against the guilty employee, against the employee who had acted, who was in charge of the bank and who had opened the locker without any authorization. And from the counter affidavit, it is clear that it was presumed that the locker has been surrendered. The bank will file a supplementary counter affidavit as to what action was taken against the then branch manager or the person in charge for operating the locker. If no action has been taken, whether they, under their prevalent rules, can take action against the person concerned. Mr. Patanjali Rishi is appointed as amicus in this case to assist this court, as there is no appearance from the side of the petitioner. List this case for further hearing on Wednesday का डेट लगा दीजिए. Somebody may be directed to hand over a copy of the pleadings to so that I can. I have told him the pleadings must be handed over to the amicus, both the writ petition and the counter. The record produced by Mr. Amit Prakash for RBI shall be kept on record. ये ओरिजिनल नहीं है ना, फोटोकॉपी है ना? फोटोकॉपी जब भी मांगे. ठीक, जाइए. Under heading for judgment. He will appear. लॉकर तोड़ दिया और पर्सनल अपीयरेंस से घबरा रहे हैं.